Hello students, welcome to the channel. Today I will give the answer of chapter number 3, Humidity and Clouds, 8th standard from geography. Without wasting much time, let's begin with the question answers. First of all, I will tell you what is humidity. Humidity is the presence of water vapor in the atmosphere, and clouds, we all know what is cloud. The first question, match the column and complete the chain. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको तीन ऑप्शन दिए हैं ए बी एंड सी करके, तो यहाँ पर मैंने आंसर दिया है बी सी. ठीक है, तो ब्लैक वाला फर्स्ट का है, रेड वाला सेकंड, ब्लू वाला थर्ड एंड ग्रीन वाला फोर्थ का है. ये कलर्स का यूज़ मैंने सिर्फ हाईलाइटिंग के लिए किया है. आपको आंसर्स बी और सी करके ऑप्शंस ऐसा लिखना है. ठीक है. Moving to the next question is choose the correct word from the brackets and complete the sentences. First one, the vapor holding capacity of air is dependent on the temperature of air. Second, the amount of vapor in 1 cubic meter of air shows as absolute humidity. Third one, as relative humidity is less in desert areas, the air is dry there. Cumulonimbus type of clouds are indicators of storm. In a free environment, the condensation of the vapor present in the atmosphere take place around dust particles. Next question is differentiate between humidity and clouds. Humidity refers to the quantity of water vapor present in the atmosphere. Clouds refers to the collection of water vapor at a greater height in the sky. Humidity determines whether the air is dry or damp. Clouds depends on the process of condensation of their formation. Third one, humidity can be classified into two types, absolute humidity and relative humidity. Clouds are divided into different types: high clouds, medium clouds, low clouds and cumulonimbus clouds. Second one, relative humidity and absolute humidity. Relative humidity, it is expressed as the percentage of water vapor present in the air to the vapor holding capacity of the atmosphere at same temperature and same volume. Absolute humidity, it is the measure of water vapor in 1 cubic per meter of air. Second point, it is affected by geographic location and temperature of a particular region. It is influenced by the land and water distribution on earth as well as seasonal changes. Relative humidity is expressed in percentage. Absolute humidity is expressed in gram or kilograms per cubic meters. It is subject to change with change in the amount of water vapor. It remains relatively constant. It contains an absolute measure of moisture in the air. Next, cumulus clouds and cumulonimbus clouds. Cumulus clouds are formed due to the vertical flow of air. ये वाली जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, वो cumulus cloud का एग्जाम्पल है. ठीक है. Next is cumulonimbus cloud. When the vertical flow increases, the cumulus cloud gradually transform into cumulonimbus clouds. See this picture which is coming on the screen. This is the example of cumulonimbus clouds. Next, cumulus clouds appear huge and are dome shaped. Cumulonimbus clouds appear like huge mountain and have an anvil shaped top portion. These clouds are grey in color and are responsible for fair and pleasant weather. These are dark color clouds which cause thunder and lightning. These clouds are also called fair weather clouds. These clouds are also known as thunder heads. ठीक है. Next question, answer the following. First one is, why is the air in a region dry? Second question, how is humidity measured? Third question, what are the prerequisites for condensation? Condensation is a process by which water vapor is converted into water. The following are the prerequisites for condensation to take place. Firstly, the presence of water vapor in atmosphere is required for condensation to occur. Second point,
Secondly, low temperature is important as it decreases the moisture holding capacity of the air, which leads to condensation. Finally, fine particles such as dust, salt, etc. need to be present around which condensation happens. See the D1. What is cloud? Write its type. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ वाटर वेपर, ये पूरा लिखना है अबो सी लेवल तक, ठीक है। ये आपको यहाँ से कॉपी करना है वीडियो को पॉज करके, फर्स्ट पॉइंट करके लिखना है। देन हाई क्लाउड्स, फिर हाई क्लाउड्स द क्लाउड्स विच आर एट द हाइट ऑफ सिरोस्ट्रेटस क्लाउड तक, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट आएगा हाई क्लाउड्स में। सेकंड मीडियम क्लाउड्स, दिस क्लाउड से लेके आपको लिखना है पूरा एल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स तक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लो क्लाउड्स, दीज आर एट एन एल्टीट्यूड, ये पूरा लिखना है, इसके 5 टाइप्स भी लिखना है, देखो पूरे टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आंसर्स को पूरा पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, आपने पॉज कर करके वीडियो को आंसर्स लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ क्लाउड्स गिव रेन। तो पहले आपको डेफिनेशन लिखना है क्लाउड्स की, उसके बाद लिखना है उसका रीजन, ठीक है। नीचे आपको रीजन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on what does the percentage of relative humidity depends. So first you have to write like this: relative humidity is determined by the amount of water vapor in atmosphere called absolute humidity in proportion to the vapor holding capacity at the same time temperature and same volume. फिर relative humidity परसेंट करके absolute humidity upon vapor holding capacity into 100 करके ये लिख के आपको relative humidity से लेके temperature is high तक लिखना है, ठीक है। Then at last आपको therefore relative humidity is usually higher in mornings and nights but lower in afternoon due to increases in temperature, ये लिखना आपको लास्ट में। Then give geographical reasons. First one is cloud float in the sky. Second, the proportion of relative humidity changes according to altitude. Copy down the answer from here. नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर बिकम्स सैचुरेटेड। सो फर्स्ट आपको व्हेन द वाटर इवेपोरेट से लेके सैचुरेशन पॉइंट तक लिखना है। फिर इन अदर वर्ड्स व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर से लेके पूरा सेट टू बी सैचुरेटेड तक लिखना है, ठीक है। ये फर्स्ट पहले पैराग्राफ जो लेफ्ट साइड पे है वो पहले आएगा और राइट साइड में उसके नीचे आएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन D1, क्यूमुलस क्लाउड्स चेंज इनटू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। Now question number 6 is solve the following. First one, when the temperature of the air is 30 degrees Celsius, its vapor holding capacity is 30.37 grams per cubic meter. If absolute humidity is 18 grams per cubic meter, then what would be the relative humidity? सो आंसर है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लगा के करना है हमको। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इनटू 100 करके ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट वुड बी द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इफ 1 cubic meter एयर कंटेन्स 4.08 ग्राम्स ऑफ वेपर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लगा के मेजर ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर लगा के ये इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 7. Collect the weather related information from newspaper for the month of July. Relate the difference in the maximum and minimum temperature with humidity. So answer will come like this. तो आपको जो लेफ्ट साइड में पैराग्राफ दिख रहा है ना वो उसको पहले लिखना है और उसके नीचे जो है वो जो राइट साइड में टेबल वाला दिया है उसको उसके नीचे लिखना है, ठीक है। With this we have finished our question answer series of chapter number 2, humidity and clouds. If you think this video is useful, please share with your friends. Do comment, do like. If you haven't subscribed to the channel, subscribe it now and share with your friends, those who really need it.